Good morning, student. Welcome to Gyan Bharati Junior College of Science, Gurgaon. In the last video, we have seen here the hydrogen atom spectrum. And in case of the hydrogen atom, when the gas is heated at the high temperature or it is exposed to the high radiations, then the gas will emits the radiations in the form of the electromagnetic waves. So in the last video again we have seen the hydrogen atom emits the H alpha, H beta and H gamma and H delta lines. There are the 4 lines in the hydrogen atom. So again we have seen here the Bohr's empirical formula and the Balmer's formula. So here the Balmer's formula we have seen Balmer's equation or the formula is that is 1 upon lambda is equal to r times of 1 upon p square minus 1 upon n square. So according to Bohr's third postulate, the electron emits the energy in the form of the photon only when it jumps from the higher energy orbit to the lower energy orbit. So here n is the higher energy orbit, p is the lower energy orbit. So here this formula is in best agreement with the Bohr's formula. 1 upon lambda is called as the wave number, that is nu bar. R is the constant having the value 1.097, that is the power 7 per meter. 1 upon p square, p is here the lower orbit number, n is the higher orbit number. So when the electron comes from the higher energy orbit, different energy orbit. So here is the nucleus of the hydrogen atom. And suppose the energy is given to the hydrogen atom is greater than that of the 13.6 electron volt, then the electron will be jumps or goes to the higher energy orbit. But in the higher energy orbit, electrons what? It stays for a very little time, very few times, having the order 10 to the power minus 9 second, that is the nanosecond. So from the higher energy orbit, means these are the higher energy orbit, this is the ground state orbit, this is the ground state, and these are the excited state. So in this excited state, the electron stays for a very small, that is 10 to the power minus second, that is the nanosecond. And it emits the radiation either jumping directly from higher energy orbit to the ground state like this, or in the intermediate stage. So this is the first and this is the second. In the first stage, the electron comes from the excited to the ground state by radiating the energy of the photon h in the form of the radiation. In the second stage, it will come to the intermediate stage, and again from this intermediate state it comes to the ground state. So in these two ways the electrons comes in the ground state, so releasing the energy. So here depending on the orbits number, there is the series of the lines, and that series of the lines are named as the Lyman series. First is the Lyman series. So here is the Lyman series. Because here for this Lyman series, here p is equal to 1 and n is equal to 2. It means that the electron coming from the 2, only the second, third, fourth, fifth and so on outer orbit, third, each that is the p is equal to 1 orbit. Means electron को कहाँ आना है? p is equal to 1 means this is the innermost orbit, इसमें आना है. कहाँ से आना है? सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, मींस डिफरेंट आउटर ऑर्बिट से कहाँ आएगा? p is equal to 1 ऑर्बिट में आएगा. That series of spectral line is called as the Lyman series. So for this Lyman series here, number first is the Lyman series. So for this Lyman series, we have seen that p is equal to 1, n is equal to 2, 3, 4 and 5, 6 and so on. Therefore alpha becomes 1 upon lambda is equal to r times of 1 upon p square. p का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. 1 का स्क्वायर 1 होगा. p square minus 1 upon n square, और n का वैल्यू कितना? 2, 3, 4, 5, 6, 7. बट p का वैल्यू कितना है? 1.
So this series of the spectral line originated from the transition of the different outer orbits to the p is equal to 1 inner orbit is called as the Lyman series. Transition of the electron in this case takes from the n is equal to 2, 3, 4, 5, 6 ये हुआ आपका क्या outer orbit. इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है? p is equal to 1 में आना है. That series of the spectral lines is called as the Lyman series. And mainly this series is obtained in the one that is the ultraviolet region of the spectrum. This is the ultraviolet region of the spectrum. क्या हुआ है? दिखाई देगा. क्या देगा? So second series is the Balmer series. So here for the second series, that is the Balmer series. So the Balmer series is obtained by the transition of the electron. By the transition of the electron, कहाँ से होगा? n का वैल्यू पहले कितना था? 2 से स्टार्ट था. अब यहाँ पे क्या होगा? 3 से स्टार्ट होगा. p की वैल्यू कितना होगा? इनर ऑर्बिट 2 नंबर होगा. So here for the Balmer series 1 upon lambda is equal to times of 1 upon p square minus 1 upon n square. So for this Balmer series, this is the second series in the hydrogen spectrum. Means p is equal to 2 or n is equal to 3, 4, 5, 6 and so on. So the formula becomes 1 upon lambda is equal to r times of that 1 upon 2 square minus 1 upon n square. And this series of the spectral line is obtained in the what? Visible region of the spectrum. ये आगे होगा obtained, ये होगा visible region. Visible region कौन सा है? विब्जा है ना? विब्जा. ताना मिही अनिता जो बोलते हैं अपन वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ये जो स्पेक्ट्रम के कलर है 7 कलर्स. तो ये दिखाई देगा विजिबल. कहाँ पे? पावर स्थिति. Means here is the transition of the electron. कहाँ से आ रहा है electrons और कहाँ जा रहा है? Means p is equal to 2. ये हुआ तुम्हारा क्या? Orbit number. So here simply this is the nucleus. Here is the first orbit. This is the second orbit. This is the third orbit. This is the fourth orbit. This is the fifth orbit. This is the fifth orbit. So here, यहाँ पे n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. ठीक है? मैं क्या देख रहा हूँ? पाल्मर सीरीज, पाल्मर सीरीज. पाल्मर का क्या होगा? p is equal to 2 means क्या होगा? ये n equal to 1, n equal to 2. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या से आ रहा है? 3 से आ रहा है. means 3 का नंबर ये 3 का आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? 3 का. ये n equal to 3 कहाँ जा रहा है? p का वैल्यू कितना है? 1 से कम. 1 से कम मतलब p is equal to 2 means for this p is equal to 2 और n is equal to 3. यहाँ से आ सकता है ये पास. means this is the series of transition. this Balmer series क्या होगा? transition of the electrons from different outer orbit means यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है. कहाँ पे? p का वैल्यू 2 है लेकिन p is equal to 2 फिक्स है. लेकिन n का वैल्यू n इक्वल टू 3 से हो सकता है, n इक्वल टू 4 से हो सकता है, n इक्वल टू 3 से हो सकता है. So this series of the spectral line originated from the transition of the electron from the different outer orbit to the p is equal to 2, that is the second orbit is called the Balmer series. And this series of the spectral line is observed in the visible light spectrum. Visible series. So this is called the Balmer series. Number 3 is the Parshall series. Parshall series. So this is the series of the spectral line obtained by the transition of the electron from the outer orbits. कौन से हैं? n इक्वल टू 1 से ज्यादा भी. p इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे? 3 और n का वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the formula for the Parshall series becomes here 1 upon lambda equal to r times of 3 square minus 1 upon n square. n equal to 4, 5, 6, 7. Therefore, for the Parshall series means यहाँ पे n equal to 3. कहाँ आना है? इलेक्ट्रॉन को 3 में आना है. कहाँ से आना है? 4 से, 6 से, 6 से, 7 से. means यहाँ पे होगा p is equal to 2, p equal to 3. ये हुआ p equal to 3. means इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आना है? 4 से आना है, 6 से आना है, means 6 से आना है. means n is equal to कितना? 4, n is equal to
divisible quantum number outer orbit कौन सा है 4 है, outer orbit कौन सा है 5 है, outer orbit कौन सा है 6 है, different number of the orbitals, but लेकिन आना क्या है p is equal to 3 ठीक है. So this series of the spectral line observed in the hydrogen atom is called the Pacha series. Here p is equal to 3 and here it varies from the 4, 8, 6, 7, etc. orbit. Therefore here 1 upon lambda is equal to r times of 1 upon 3 square minus 1 upon n square, and this is obtained in the observed in the visible light region. Next series is the what bracket series. This is the fourth series obtained in the hydrogen atom. Means bracket series. BRACKT bracket series. So this is again the series of the spectral line obtained by the transition of the electron. K is equal to कितना 4, but n is equal to कितना 4 से 8 ज्यादा means 8 से 6 से 7 से 8 से and so on. So formula for this becomes r is equal to कितना हुआ 4 हुआ. Therefore यहाँ पे 1 upon lambda equal to r times of 4 square minus 1 upon n square. And this series of the spectral line is obtained in the infrared region. क्या होगा ये infrared region होगा. इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है? इस p इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 3. ये क्या होगा p इक्वल टू 4 पे आना है. यहाँ आना है. कहाँ से आना है? n इक्वल टू 6 आना है. मीन्स ये ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम मीन फ्रॉम 5 टू 4. a 6 से 4, a 7 से 4, a 8 से 4. Means this is the series of the spectral lines obtained by the transition of the electron from different क्या outer orbits having the value n is equal to 5, 6, 7 and 8, but p is equal to 4 में आना है. This series of the spectral line is called the bracket series. So next series of the spectral line is the third series. So this is the third series. Third series means this is the fifth series. Therefore here transition of the electron to the p is equal to p. यह इक्वल कितना है 1 से ज्यादा मींस 6 से स्टार्ट होगा 6 7 8 9 10 and so on. Therefore here means this is the series of the spectral line. Bracket series का कितना था यहाँ है नियर इंफ्रारेड में था नियर इंफ्रारेड. और ये कहाँ है फर्स्ट सीरीज फार इंफ्रारेड में आएगा. ये फार इंफ्रारेड रीजन mean this is the series of the spectral line originated from the transition of the electron. कहाँ से आ रहा है? n equal to 6 है. n equal to 6 कहाँ है? यहाँ पे होगा. इसलिए यहाँ अगर इस यहाँ पे आ जाएगा p equal to 5 और n equal to 6 यहाँ से आएगा. यहाँ से आएगा. यहाँ से means here are the 5 series, mainly Lyman series is observed in the ultraviolet region. Palmer series is obtained in the visible region. Parkman series infrared region. Bracket series near infrared region, and third series far infrared region. So energy level diagram for this series are shown on the blackboard like this. But it is not necessary to show the diagram on the blackboard because here I have already showed this on the blackboard. So here for this energy level diagram, draw the some parallel lines denoting here the principal quantum numbers and energies. So here the energy level diagram for the hydrogen atom. Energy level diagram. ठीक है. से एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपन लाइक दिस ऐसे. These horizontal lines denote series
क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर means n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7. These are the principal quantum numbers. अब लाइनर सीरीज में क्या था? लाइनर सीरीज means 1 upon gamma equal to r times 1 upon p square minus 1 upon n square. p का वैल्यू था 1 और n का वैल्यू था 2 और ये एनर्जी है इक्वल कितना था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला ऑर्डर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज E1 equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी एनर्जी क्या थी E2 equal to -13.6 divided by 2 square means 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 equal to कितना है -13.6 upon 3 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 equal to -13.6 divided by 4 square electron volt. E5 equal to -13.6 divided by 5 square electron volt. E6 equal to -13.6 divided by 6 square electron volt. और E7 equal to -13.6 upon 7 square electron volt. अब लाइनर सीरीज के लिए क्या देखा था हमने? ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा है? n equal to 2 से हो रहा है और ये यहां लिखा हुआ है n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 मींस 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, ट्रांजिशन 6 से हो सकता है। बट लेकिन इलेक्ट्रॉन का कहां आता है? p equal to 1 में आया है। अब मींस n equal to 2 से स्टार्ट करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसी में वैल्यू आती है p equal to 1। इलेक्ट्रॉन सेकंड से आया, इलेक्ट्रॉन थर्ड से आया, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आया, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से आया, इलेक्ट्रॉन सिक्स से आया, इस इलेक्ट्रॉन सेवन से आया, सेवन ऑर्बिट से आया, सेवन। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड द लाइनर सीरीज। दिस इज द लाइनर सीरीज, ठीक है। अब सेकंड सीरीज क्या था अपना? बाल्मर सीरीज, सही कहा, इसका बाल्मर। अबे बाल्मर सीरीज के लिए क्या था फॉर्मूला? is 1 upon gamma equal to r into 1 upon p square। p का वैल्यू कितना? 2 means 2 square minus 1 upon n square। here for the Balmer series p equal to 2 and n equal to 3, 4, 5, 6 and 7 and so on। इलेक्ट्रॉन को कहां आना है? सेकंड में, मींस यहां पे आना है सेकंड में। कहां से आएगा? थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा। मींस p का वैल्यू कितना है यहां पे? 2। कहां से आना है? 3 से, ये फोर्थ ऑर्बिट से, ये फिफ्थ ऑर्बिट से, ये सिक्स्थ ऑर्बिट से, ये सेवंथ ऑर्बिट से। सो दिस इज द सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। मींस p equal to 2, n equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8। So this is called the Balmer series। This is the Balmer series। इसके बाद की सीरीज कौन सी है? कौन सी है? लाइनर बाल्मर पार्शियल सीरीज है इसके बाद की। तो पार्शियल सीरीज दिखा देते हैं। और नंबर 3 पार्शियल सीरीज। तो हियर पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज के लिए फॉर्मूला 1 upon gamma equal to r times 1 upon कितना? ये 2 हो जाते हैं, एक से बढ़ा देते हैं, मींस p का वैल्यू 3 square 3 1 upon n square। मींस यहां कितना हुआ? p equal to 3 और n का वैल्यू कितना? 4, 5, 6, 7, 6 1। इलेक्ट्रॉन को कहां आना है? 3 में आना है। कहां से आएगा? 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा। मींस p equal to 3, n equal to 4 से। मींस दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सीरीज। कहां से आया? 4 से आया थर्ड में, 5 से आया थर्ड में, कहां से आया? 6 से आया थर्ड में, 7 से आया थर्ड में। So this series is called the partial series।
called as the partial series. Then next, कौन सा था? ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट के लिए क्या? 1/λ इक्वल r into 1/, ये क्या बना? b इक्वल टू 4 और 1/n स्क्वायर. का वैल्यू क्या? 5 6 7 8 9 10 so on. Therefore for this series b is equal to 4 and n is equal to 5 6 7 8 and so on. ठीक है. So this is the bracket series. कहाँ आना है? b is equal to 4 में आना है. कहाँ से आना है? 5 6 7 से आना है. मीन्स 5 कहाँ है? ये मीन्स यहाँ से आया इसमें. p is equal to कितना? 4. n is equal to कितना? 5 से. n is कितना? 6 से. a कितना? 7 से. So this series is called as a bracket series. This should be bracket. Then next, fifth series is the Fund series. P is silent here, Fund series. Means 1/λ equal to r times 1/, कितना? p का वैल्यू कितना? 5 बन जाएगा इसमें. p is equal to 5 means 5 square minus 1/n. और this series p is equal to 5 and n is equal to कितना? 1 से हमें 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है. इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है? p is equal to 5 में आना है. कहाँ से आना है? 1 से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से? 6 से 5 में, 7 से 5, 8 से 5 मीन्स यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन. So here 6 से 5 में. From the 6th orbit to the 5th orbit, from the 7th orbit to the 5th orbit, from the 8th orbit to the 5th orbit. So this series is called the Fund series. So these are the different series obtained in the hydrogen atom spectrum. Lyman series, Palmer series, partial series, bracket series, Fund series. And this here indicates here the outermost orbit level, that is the principal quantum number is equal to 1 2 3 4 5 6. For the first principal quantum number, that is the lowest state energy of the electron minus 13.6 electron volt, और second के लिए minus 13.6 upon 4 electron volt, E3 minus 13.6 by 9 electron volt. Fourth में होगा E4 is equal to minus 13.6 upon 16 electron volt, means energy of the electron in the corresponding energy orbits. So this spectrum of the hydrogen atom may be asked in your examination for the 3 or 4 marks. So go through this series of the spectral lines and numerical formulae. So here is the hydrogen atom spectrum and the chapter now comes to an end. So in the next video we will start the new chapter, that is the last chapter from the syllabus, chapter number 16. Okay, thank you so much for watching my video. Okay, thank you.